Rajdeep Sardesai, consulting editor India Today, and he will introduce you to our guest who actually needs no introduction. Flamenco, my brother. Do you know Natu? What is Natu? పొలం గట్టు దుమ్ములోన పోట్ల గిట్ట దూకినట్టు పొలేరమ్మ జాతరలో పోతరాజు ఊగినట్టు గిర్రు చెప్పులేసుకొని కర్ర సాము చేసినట్టు Ladies and gentlemen, he's just back from the Oscars. He's just back from creating a slice of history. He's just back from becoming a truly global star. And we are absolutely delighted that even before he touches down in Hyderabad, he's touched down in Delhi to be here at the India Today Conclave. Please give a big hand for Ram Charan, who really has, as I said, stirred things up and made us all very proud. Thank you. What does it feel like? It's been what, 72, 96 hours since that wonderful evening in Los Angeles. Have you come to terms with the fact that you are part of this Oscar moment? Good evening, everyone. Thank you for having me, Rajdeep. And sir, I have to say, I didn't touch down. We touched down as a team. The whole RRR team touched down. And yes, it's been a couple of hours, 2 days. We are still soaking in all that excitement. I'm still pinching myself, or my wife is still pinching me, saying, "Did it really happen? Yeah, hua kya?" So, why, she's right Upasana, here. why don't you just, bask in the glory also? Come on. Yes, I think she is my lucky mascot, and the 5.5-month-old baby inside her is even more lucky for me. Wow. That's right. This is terrific times. You produce a or you're part of a blockbuster that's making 1,200 crores or whatever and counting. You won Golden Globes Awards. You win an Oscar. And most importantly, you're going to be a father soon. Absolutely. What a coincidence. All good things come at once. I think that's true. Absolutely. But, just let's relive that moment. All of you there waiting with bated breath for whether you'll get the Oscar or not. What were the moments leading up to that evening? Were you confident given what had happened in the Golden Globes, or was it something that did you have a sleepless night? I think, personally, I will talk for myself. I was just fortunate to be midst of that celebration. That kind of an event, we've been seeing it
I was a fanboy of the Academy since I was a kid. I think we have got, I mean, nothing is more than the audience in the theater. I think that is my biggest award. I'm not saying it just like that, but what India has given us is my biggest award, and rest everything was another feather on the hat. And I believe it. So, win or not win, doesn't make a difference, because we have reached the Oscar carpets. And rest, I think, the God decided. You know, you're being very modest. Not really. I truly mean this. I truly, truly mean this. Reaching that stage, of course, all of you know it is 92 years of our industry, and it's such an honor. And what this acknowledgement did to us, it's not us, it's for India, it's for the technicians, the directors, and the beautiful from Satyajit Ray to now Mr. Rajamouli. We all have been recognized, but this is a unique acknowledgement our industry has got, and for us to just represent that and be part of it was definitely a responsibility. It was weighing on my shoulder, but I was just enjoying the moment, and that is what is more important than getting tensed about the award. So you say you were not really tense about getting the award. But trust me, I would have been the happiest if I definitely get it. No? Okay. But that moment when they actually make the announcement and they say that, you know, Natu Natu gets Best Original Song, that particular moment, what was that like? That particular moment, I think all of us were tensed. We went numb, like really numb, no feelings. All I could feel is my wife's hand really holding me like Mike Tyson was holding me. She was squeezing. I had creases on this thing, but all that is an emotion that we've been carrying it. I think since 2018, we've been under this the shooting process. And then the hard work the team has put in, everybody is saying some different things, but truly, they have appreciated a good cinema and the excellence of my director, Mr. Rajamouli, and his great team, Keeravani and Mr. Keeravani and Chandra Bose. You know, I'm going to come to all those individuals because, as you said, filmmaking is a team effort. Absolutely. And these are all wonderful names who, I thought you put it beautifully, it's a tradition that, you know, from Satyajit Ray to Rajamouli, the art of filmmaking can evolve over the years. But there is a bit of a mystery which is playing out on social media, controversy, let me not even call it a mystery, that why didn't you and Junior NTR actually dance that day? Why weren't you all on stage celebrating this great moment? Were you not called by the Oscar committee to do a Natu Natu a quick take on stage? What happened? Sir, everybody said you do have a twist when we sit with you. There is. But I was very optimistic. Sir will not put me on that spot. It's not being on the spot. No, but tell us really, what happened. I will tell you. I mean, I've told you in the LA media, sir. I was ready. I was 100% ready to get that call. But I truly don't know what happened. But let's not even talk about it, because the troupe who did there, I think they were fantastic, and they did a better job than us. I have done it for so many times, so many stages, and different awards and meetings, interviews. Now it's for us to relax and enjoy the show and somebody else perform for India. Basically, imitation is the best form of flattery. Right? Yes, absolutely. As long as you can spread the dance across the world, who does it? Doesn't really matter. Different cultures, different age groups. You see it, every home, a father and son, mother and daughter, I don't know, wife and husband, they've taken this. I feel it's no more our song. It's India's song. It's a Janta song. It's the people who have taken us to the carpet. In fact, my son went to a wedding in Hyderabad where he said that from 10 o'clock to 1 o'clock, they were 10 a.m. to 1 p.m. They were taught how to do the dance so that at the wedding, everyone was made to do it. So it's India's wedding song now. Absolutely, it's India's song. It's India's song. That's a great way to again put it. But I just want to understand from you, what did it take to actually do that dance? We'll come to the other aspects of the film in a moment in your own career. But that dance itself, apparently with all the ensemble cast around, how long, how difficult was it? Give us a sense of that. Like you see, sir, if you see the palace we shot in, it was the Ukraine's
president's palace. Which, Yeah, I think we've got a shot of that. We'll yes, put that out. so I think he's still operating his the war from that palace as we are speaking. He was so gracious, being an artist himself. He let us shoot there. We were shooting there for 17 odd days, but out of that we shot for 12 days. But the director got us to Ukraine 7 days prior just to rehearse in the location with the dancers. We had 150 to 200 dancers there, and they were the best of the best from Europe. My knees still wobble really when I'm looking at that step, because I would have had some knee pains very bad. I'm suffering even now because my co-star and me have done more complicated steps in our lives. But this song was not that complicated. It is in a certain way because both our styles had to match. If my hand went 45 degrees, his hand had to go. But how am I going to see what he's doing? So it is very difficult. So we have done what you see there over 17 times just to perfect. That's why we call my director the beautiful torture. The beautiful torture. Yeah, that's what he does. You won't believe I heard my composer's speech, because Oscar is all timed to 45 seconds. They shut the mic or they do. My director is so particular. He made my composer rehearse that speech so it stops at 45 seconds for 15 to 20 times. But Kiravani was brilliant with it. It was perfect. He is so adorable. Nobody has sung like this. And the Carpenter's song, and him, Mr. Carpenter, he replying back. It was a moment. So it took you a week to rehearse the song. And shot it for 12 days. So in all, for 19 days, you were virtually eating, breathing, sleeping the song. We used to wrap shoot at 8:30, rehearse that night again till 10:30, sleep and go back to shoot around 6 o'clock. We did that as a clock for 20 days. Yes, you're right. Pretty impressive. Pretty impressive. I think he deserves a, it is, of course, obviously, it is about putting all those pieces together then. You're in front, you've got the choreographers, anyone whom we don't know who really deserves credit. Is there someone? Our choreographer, definitely, as you mentioned, and every technician there. Especially thanks to Ukraine, the crew members. We had about 120 Ukraine crew members who were brilliant in supporting the Indian culture and the knack of filmmaking, because we didn't have to suit their culture. They were so warm and receptive. They said, "Chalo, aapko kaise banana ye song? We'll do it your way." So that's something I told my wife right after getting back, we have to go back for a holiday with family. But 3 months after that, you know what happened. Okay, so now there's the partnership between you and Upasana, and there's the partnership between you and Junior NTR. Tell us about this partnership. Of course, I've known him for a very, very long time, since we were kids. And we became very close 4 or 5 years before the film started rolling. I don't know whether he decided to cast us or whether he saw the friendship between us and then cast us, because his job will become easy to shoot with us. Now, what I was told is Rajamouli first came to you, told you about the film, but didn't tell you that he was going to get Junior NTR as a co-star. Yes. Went to him, didn't tell him that he was going to get Ramcharan as a co-star. RRR initially meant Rajamouli, Ramcharan and Junior NTR. You came to know about the fact that you were going to co-star with each other later. Is that true? That's true. I don't know who he made the first call, but Junior NTR was already at Sir's residence. I entered, and Tarak was like, "Wow, this must be some news," because he was alone. Then he saw me and said, "Why is he here, yaar?" I thought I'm doing a solo or something. But then I entered, and then, the magic happened. He just opened the Pandora box, and he told us that I'm casting both of you. And if not for Mr. Rajamouli, I swear I don't think we would have done this combination for any other director. You wouldn't have done this for any other director. I mean, for everything we've earned and built our career, putting our careers in hand, because it's I don't know, but they used to say we were the rival family for more than 35 years. Tarak's, Junior NTR's family and our family, which we never had it personally. It's the fans. And to bring both of us together, to put our trust in somebody, it has to be Rajamouli, and Rajamouli knows that it'll only happen because of him.
What is so special about Rajamouli? You did Magadhira with him, 2008? Yes, 14, 13 years back. 14, Yeah, 13 my years back, second- your first big blockbuster. Yes, sir. Yes. What is it about Rajamouli that makes you so confident that you just leave yourself in his hands? I like working with taskmasters, and I like somebody who puts me on my feet. My wife does that. And She tortures you or she puts you? No, it's not a torture. It's a beautiful torture, like Rajamouli. So it keeps me up, it keeps me going on my feet always. So, Mr. Rajamouli, every time you think, wow, I've learned enough, both see clear, I know it all, you work with Mr. Rajamouli and he tells you, this will still be the beginning. So he's like, I'm going back to school. So I always learn something new. He always gives us the best career hits for every actor he works with, be it Prabhas, Junior NTR, or myself. So after my dad and Mr. Pawan Kalyan, my uncle, if I have so much respect, like it's only for one man, it is Mr. Rajamouli. You know, let me take you back. You mentioned just now your dad. By the way, Chiranjeevi sir is Chiranjeevi Garu is somewhere in the hotel. He's sleeping. Yes, as I told him, I'm touching down in Delhi, and he couldn't wait, and he came to Delhi to receive me. Arey, lovely. We used to see him around in Parliament. He was a minister. We'll talk politics later. You know, coming from these film families, both you and Junior NTR, and as you mentioned, there were these film family rivalries, at least built up by fan associations. Yes. In Bollywood, there's this huge debate about nepotism, that people get breaks only because they are so-and-so's children. In your case, was it something that came naturally to you, cinema? And you've actually, in many ways, actually taken your father's legacy several steps forward. How do you see this? Was it in those early years being Chiranjeevi's son? Or was it difficult to become Ram Charan, your own identity? I don't know, sir. I don't really understand this. It's a herd mentality. This topic is just driven by a herd or really an individual who feels like this. Because you have a great Mr. Rajdeep. His son might be inclined towards journalism. It is something like that. He does have a better chance in working with NDTV maybe. But at the same time, if you're a fantastic cardiologist, the son also is inclined. So I'm inclined towards acting. I was breathing cinema, living cinema, meeting the producers. I'm inclined towards it. Now, if you call that getting a better chance, I don't know, but I was in a film school since I was born. So I know the art. I wouldn't have been sustained for 14 years if I was not doing something good for myself and not just my dad. So everybody has to. Maybe there'll be a stepping stone for a good platform to step onto. But after that, you have to continue this journey. If not, if I was a normal person, I will not spend 100 rupees or 500 rupees on somebody who I think is somebody's son. You know, it's quite remarkable. 4 months or 5 months ago, we had Yash, also at India Today Conclave. And I saw that. And he's the son of an auto rickshaw driver. See, there you go. And you've got Ram Charan, son of Chiranjeevi, and both of you are superstars. So it seems to be, at the end of the day, it's all about audience acceptance. Absolutely. If the audience accepts you, you become a superstar. Talent speaks. So Yash, I truly believe his talent spoke. And every other artist who's successful here, only their talent speaks. Families in Telugu cinema were also a big factor. NTR's family, Chiranjeevi Garu's family, there have been other family trees in a way in Telugu cinema. Is Telugu cinema also coming of age with what's happened with RRR, and not just RRR, we've seen with Southern cinema in general, the rise of Southern cinema in the last 18 months. Films, one blockbuster after the other. Is there a sense of renewed confidence that you have? I don't have to go to Bollywood now to make it. I'm a global superstar without going to Bollywood. Yes, sir, this was begun, and it had a very strong impact in our industry and in our films, with the Telugu happening with Bahubali and now crossing all the boundaries. But I feel this is a big hit, not because it's from the South or anybody. We have so many industries from Bengal
to Tamil Nadu in the south. We have fantastic directors. And I feel what will really make an impact with the West or in Japan or in Australia is Hamara Mitti Ka stories have to come out. And Magadira was like that. Lagan was like that. And The Parasite from Korea, it was their own story as well. So anybody who makes them from their culture, their folklore, their emotion, their struggle. And India has so much of all of this. And the West and the global audience are ready to accept somebody who is original. And India has many, many original directors, many original states who have their own beauty in this music and storytelling. And that's what I feel we will transcend out of this. So you're saying cinema in India has transcended all geographies today. Today you don't look at it in terms of Telugu cinema, Hindi cinema. You've just got to look at it as Indian cinema, tell good stories, preferably on an epic scale sometimes. Absolutely, sir. This is no more Indian cinema. This is no more, there's no more Telugu, Bengali or Bollywood or Hindi cinema. This is Indian cinema. We should propagate that as Indian cinema. And I want the global audience to feel that all of us are one cinema. Is that how, when you went to Los Angeles this time, and you're surrounded by all these Hollywood celebrities, I saw a small interview of you where you said you wanted to meet Tom Cruise. Yeah. Did you ever think Tom Cruise might want to meet Ram Charan? No, definitely not for now. How do you know? Maybe in the future he will. But not for now. Right now I want to meet him. Right now you want to meet Tom Cruise. You could do a Top Gun Maverick. Sir, wish for it. Maybe hoga. Hoga? Yeah. आप wish उसको कोई Indian title देके Top Gun Maverick कर दो. Tell Rajamouli that I've got the rights for an Indian Top Gun. No, I will wish for it. Let's see. Your wish will come true. Many things came true, I heard, what you wished. Over the years, many things have come true. We should discuss all these things on another day. But, as you look at it, the point I was making, when you went into that room at the Oscars, there wasn't that sense, perhaps say 20, 25 years ago, had you gone there, you would have perhaps not felt at ease in the manner that you perhaps do. You want to be a global star, right? There's talk that you're going to do a Hollywood film. Is that true, that you could be doing a Hollywood film next? Don't know, sir. I would leave it in LA, what I said. I read it somewhere on the net. So that Ram Charan offered a Hollywood film. True or not? We are seeing something, so we are working. It's too early for me to say, but I heard your predictions will come to give me your wishes. I will make sure it happens. You've heard, or have you signed are you in the process of signing up? Process. Everything is a process. Everything is a process until it happens. So let it happen, sir. It will happen. You see, this is why part of the secret of the South is you don't tell the full story, so that expectations are kept low, and suddenly, boom, we'll hear Ram Charan opposite Tom Cruise in Maverick 3. Sir, my mom always says, "Sabka nazar nahi lagna chahiye." So I leave it. I mean, who doesn't wish? Everybody wishes, and all of us want to work in every industry where talent is appreciated, and is wajah se I want to work. What's this journey been like? As you said, the early films, you get your first breaks because you're part of a film family. Then over time, your first big hit, Magadira. Slowly, other hit films keep coming in, and you just seem to go from strength to strength. How has this journey been? What have you seen? How has Ram Charan changed over these last 15 years? I think starting from my family and everybody think I've changed a lot. Thank God. I call it not a change. I call it evolution. I'm evolving as a person, as an actor. I'm understanding my director's inside. I'm getting into his head better. For any actor, what is the most challenging thing is, are you understanding your director and are you getting exactly what he wants? And I'm slowly getting much better at that. That's what my director Rajamouli also says. If there's anything as an actor I wish in the future is get into the director's head who has been dwelling in it, writing this subject before they narrate to you for a couple of years. And that man owns it more than anybody on the sets. And any actor, I just wish, get into your director's head. You will always be a successful actor.
But in those early years, you spent some time in a school in Mumbai, learning a bit of cinema. Yes, sir. An acting school? Namit and Kishore Kapoor's. That's right. So Yes. you did the journey to Mumbai Yes, in that yes, sense. yes. There was a time, as I said, that whether it was even the great Shivaji Ganeshan and others aspired to become also recognized in Hindi cinema. I want to act opposite the big Hindi film actors and I want the big Hindi film directors. Did you feel that at any stage over these years, or were you very comfortable in your own skin? I'll be lying if I say I didn't. I really wanted to be part of Indian cinema, the Hindi cinema, only because I want to reach out to a larger audience. I want to reach out till Delhi, till West Bengal, to Rajasthan. And my only source back then for all of us was Hindi cinema. But now the truth is Hindi cinema wants to come to you. Sir, they've also been doing great for so many years. And we've just started, and I don't want to claim that we have arrived. No, we are all have arrived, and they've had the share of the, the pie. And now we are having, and together we will do it too. We'll have a pie together. You can make history together. Yeah. In those early years in Mumbai, was there any star that you aspired to? Is there someone whom you wanted to go and meet and say, look, here I am, Ram Charan, possibly son of Chiranjeevi. You might have wanted to use that in the intro. Was there someone you wanted to go out there and meet? I mean, even before I wanted to meet, he invited me, being my dad's very old friend. They've done thumbs up ads together for a very, very long time, Mr. Salman Khan. He said, I heard, beta, you're in town. I said, how come? I said, nothing happens in Bombay without him knowing, I feel. And he invited me home. And that warmth reception, I'll keep it in my heart until today. Salman Khan is a great host, but dangerous when he invites you home because the night doesn't end till 5 a.m. No, sir, he's very graceful. He lets us. He lets us. Whoever wants to go. If the people are staying there, it's voluntarily they're staying. So you're a Bhaika fan. Yes, yes. Your image, in a way, has been built at the moment over this angry action hero. Is that your favored image? Do you believe an actor should have a particular image, or are you the kind who wants to constantly experiment, do new roles? If someone comes to you tomorrow, I believe tomorrow morning, in fact, you're going straight from here to another dance sequence, Yes, which is again probably going to take a week. So is that how you see yourself, the action hero, the dance hero? Do you get stereotyped in a way because of your success? I mean, firstly, sir, I think I want to be part of every genre. That's that's for sure. And coming to action, every hero, I think every artist wishes to be an action hero. I have seen romantic rom-com heroes saying, sir, this saal mein action try karunga. Because more audience, the crowd pullers are always the action films. And I'm so fortunate, thanks to my God, I'm already an action hero. But maybe I would like to try something different, and I hope the audience are inviting enough. We, as I said, the Chiranjeevi factor. What did Dad tell you when you were stepping into cinema? What were the words of advice that he gave you in those early years? That day, I still remember the first day I was going, I said, man, I wish he gives me that one formula that makes an actor successful. And to my surprise, he said, Ram, this is going to be a first day, first film. Make sure you take care of your staff because they are the closest to you. Be it your chauffeur, to your man who's always next to you, your makeup artist, all these guys. Make sure you take them very seriously and respect them. If they start talking about you, your career can end very soon. So take care of your guys who are near and dear to you, and that in return means you're taking care of everything else. I've seen usually stars' best friends are their hairdressers. I believe so. There. Yeah, he's been with me for 15 years, all of them, from my first film. Give them all a very big hand. Come on, guys, come here. So So you have
there's a team Ramcharan that goes along with you, I'm told. Yeah, so even if I had a bad flop, I still had taken care of these guys. Bring them on. Bring them all on here. Come on, guys. You are part of his success story. Ajao, Gaurav. You got to introduce them to us. Come on. गौरव वो बटन पहन लो यार थोड़ा decent. ये भी action hero है. He's been there since my first movie, since 2008. He's your. He's been there since 2009, sir. Both of them. Hipin, Ajao. That's Hipin and Gaurav, sir. So they handle your hair and. Yes, he handles my hair. He's been handling my face. So both are from Bombay, sir, and they've been staying with me literally. Wow. So that's Team Ramcharan. In Yeah. a way, these are. You got any more out there? I mean, all my guys who drive my car, he's been with me for 18 years. My cook for 33 years, he carried me, and now he's still with me. He's bearing, all these guys bearing with me. Thank you for bearing with me. Let me Thank bring you. Upasna in here also. Come on stage because she's part of Team Ramcharan. Come on. Wow, be careful, man. Come. And, my manager Praveen is here, sir, bring since him in. 15 years. Praveen? Praveen, where are you? Praveen ji thinks... This is 15 years Team Ramcharan. Where is he? So Praveen always slips out saying, "Ye har bar ek hi baat karega." So he goes out. Upasna, what's it been like? Give us a sense of what the last week, last few months have been like. Golden Globes, Oscars. It must be a dream. It really is, and my baby's been very kind to me to let me travel, and it's been really, really nice. And I'm really grateful to Ramcharan and my, all the people around my family and everybody. All I can say is I'm very, very grateful. Thank you. She's not this soft-spoken at home. Is that true? Is that true? You see, either you're doing beautiful torture. Is that true? Tell the truth. bol. Nahin? No. We'll leave it, sir. You leave it there? Sure thing. Huh? She's like, come home. Thank you, Thank you. Upasna, and thank you to the two of you. Congratulations to you all. Achha, now I've just heard you mentioned Salman Khan, but I'm told that you're a good mimic of Khan Saab. No, not at all. That's Have you not- done any so mimicry? totally true. If it's true, I would have done it right now. But no, false information, sir. But is there a Bollywood star that you sort of emulate or you consciously try to emulate or any star? It need not be. No, my wife is the biggest Shah Rukh Khan fan, and I am a Salman Khan fan. And sometimes we switch our roles here and there, depending on that film of the other actor. But we don't imitate anybody. It's so difficult. Is that important that for you, every actor has to eventually build his very own character? Each really big superstar is eventually his or her own person. Absolutely, every actor thrives to have his own personality, his own style. But I feel being fluid is more important for actors and directors to see you in different roles. I feel it's better not to have a very unique style, because your unique style sometimes can overshadow a character which you're playing. But one challenge, Ramcharan, that you will face is after such a mega hit, what next? You've got this film with Kiara Advani. It's going to be again multilingual. Yeah, with Mr. N. Shankar. With Shankar Yeah. as the director. So you've got how do you go past an RRR? You've scaled a kind of Everest in a way for many. I am already working on one with Mr. Shankar. And again, I am working on a path-breaking film, which I felt, path-breaking character, which is better than my previous subject called Rangastalam. It is again a very matti story, which I'm starting from September. And I feel that film has every possibility to go to the Western audience and woo them as an Indian matti story. So you're already looking at what the next big project is. I'm very, very, very confident on what I'm doing, what I'm about to do, and we're starting from September this year. So you're hoping that maybe a year from now you'll be back at the Oscars with a new project. Thank you. I hope so. I hope so.
So at any given time, you work on one project, more than one project. How do you plan your life? Sir, I've been trying to do 2 projects. Both EMIs have to बहुत pay. EMIs है, क्या बात करता है यार? But it never तो happens. आपका थोड़ा EMI हमको भी दे दो. Sir, no, as on a serious note, I think the directors I've been working are such mavericks, and they like to get our time totally for themselves. And Magadira, I've shot for 2 years. RRR, I've shot for 3 years. And Shankarji's, I'm sure, almost 1.5 years. So it's never happened. It's my long wish to do 2 films a year, like some actors do. Yeah. Because one of the things we've been told is the actors who come from the South come with less pretension and fanfare and a greater sense of discipline. I saw it even when you were doing, and a sense of perfection, that you want everything to be perfect. We saw it briefly during your photo shoot also today. Is that the secret of the success of many of you? That you all are very, very disciplined. There is a dedication to the craft. I'm not saying that Hindi cinema actors are not, but the star world can change you in a way that it doesn't change you down south. Absolutely, sir. I think if there's anything, I say, even a bad actor with a lot of discipline has more possibility to sustain than a great actor with bad discipline and a bad, not so good discipline. I don't think he has any chance to survive. Today, my dad is 67 years. He's signed 3 films. He's the most busiest actor right now in Andhra Pradesh and Telangana. He's still rocking it. He says, if I don't work out, my knees are hurting. So he wakes up every day at 5:30 just to have that day pass without a knee pain. So that kind of a discipline, I think it's a bit of a burden on my shoulder. I said, your dad is waking up. Why are you not waking up? I said, chalo, yaar, we'll also wake up. And so, yeah, I guess that's working for him. And we would like to follow that. He wakes up 5:30 a.m. in the morning 5:30 to work out at the yeah. age of 67. Yes, sir. And, he had 2 releases this year, and he's going to be on the floors with 2 more films this year. So he'll have 4. Any kind of, I saw a lovely photograph on Instagram of 2 of you relaxing in the garden. Yeah. I think, yes, sir. you know, you were sleeping on the garden, on the grass, and he was resting on his sofa. Just trying to understand, any family competition at all? Does dad tell you, "Meri picture tere se zyada chalegi"? I think anybody at home can say good things, but my mother says he gets very personal. Acha. Yeah, so anybody can appreciate me, my wife, my sisters, my siblings, but my mother should balance it for him. Acha. So yeah, maybe there is a sense of good competition. You know, you come also from a land where NTR was the original actor-politician. Dad also became a politician, became a minister, started his own party, eventually decided enough of politics, calls it, I believe, one of the regrets of his life, and has gone back to acting. You ever thought, might as well, you know, like RRR, let's roar now in politics? I like to sail in one boat, sir. I know how to sail only in one boat. Don't know what will happen to my crotch if I sail in 2 boats. So I like to sail in one boat. And that is film industry. That is film industry. Absolutely, sir. No question of, No, sir. no netagiri. Nice, sir. अरे इतना बड़ा छोड़ तुम्हारा दो, fan sir, base है. please. छोड़ दो. No, not at all. I think for now I know only acting. I have a production house. I've produced 4 films, and I like to do much more in this industry and contribute more as a film personality. Okay, so Jagan Mohan Reddy safe in Andhra and KCR Gadu safe at the moment in Hyderabad. Okay, we've got about 9 or 10 minutes to go. We're going to have a lot of fun now. Sir. I'm going to, you know, you're a rock star among our entire office. I can tell you, you cut across all geographies. I'm going to call 2 of my colleagues, Akshita and Nabila. Akshita speaks very good Telugu also. Namaskaram, Ramcharan Namaskaram. garu. Just one second. Praveen garu Hi, is here, who you Praveen, called that's earlier. Praveen, that's your who's been manager. taking Come on in, care, Praveen. who made things possible Go ahead, for me. sir. Thank you, Praveen. Thank you for So acknowledging he's your that. manager who's been the He's one been the right longest. through. Give Round him of a big hand, applause, ladies and please, for gentlemen. his manager. That's my manager. Hi, Praveen. Praveen, now you tell us, what's the best thing about your boss? Only good things, please. Good evening, everybody. No, you can say good, nice. Well, what? Don't worry. We'll handle that. What's the best thing about your boss? He's the fantastic human being I've ever met in my life.
Sure. 500%. Nobody believes that. What makes you say that? What makes you say? I've been working with him for the past 15 years, and I'm in the industry for the past 20, 25 years. And I've worked with a lot of people. It touches by the soul. He touches your soul. Lovely. What a lovely thing to say. Thank you very much, Praveen. Thanks, Abhijit. Okay, You great. know, Rajdeep, I really have a question for Ram Charan. I'm Yeah, sure go ahead. most of the girls who are drooling over Ram Charan want to know if that intense probing eyes, do you do that like, intentionally, or does that just come naturally to you? On screen, it's Even not, it's otherwise, look at because it. It's not working off screen, madam. You want to try doing that for our cameras? Oh, Okay, yeah. Nabila, why don't you Wait. stand there and see whether he does it or not? Come No, on, I let's see can whether see it works. every movie with every dialogue. She's your co-star, and you've got an intense scene. With, You've with, got to. with her, you cannot look like that, sir. Okay. Sorry. Nabil, I think you can be very aggressive if you want. I feel you're very charged. Give me one look which you've seen of mine. Like you? Yeah. I felt like look like that guy in Rock. That. But that just works for him, doesn't it? Akshita. Yes. Sir, okay, request for your Telugu audience, okay, You Sandesham tell. Telugulo cheppandi. అంటే తెలుగు వాళ్ళకి ఎన్ని చెప్పినా ఎంత థ్యాంక్స్ చెప్పినా సరిపోదు నాకు వాళ్ళ వల్లే మేమందరం ఇక్కడ ఉన్నాం మా నాన్నగారు కానీ మేము కానీ వాళ్ళు ఇచ్చిన ఈ ఎనర్జీ ఒక తెలుగువాడిగా నాకు చాలా గర్వంగా ఉంది మా వల్ల సరే వాళ్ళ వల్ల మేము ఈ స్థానంలో ఉన్నామని వాళ్ళకి మనస్ఫూర్తిగా లైఫ్ అంతా కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటూనే ఉంటాను థ్యాంక్ యూ You know, I really want to say this since I have this opportunity, and since Rajdeep, you may not know, speaking to a bunch of Telugu producers, they claim that Ram Charan is a one-take star. He does not do takes. And if he's asked to do another take, he knows his first shot is perfect and that's it, it's done. Rangasthalam, if I'm not wrong, why don't you tell us, your movie was shot so quick because he just finished it in time. Ma'am, you said producers will like to do one take, so it's finished early. We'll wrap early, but not really. Once I was just telling Rajiv that once you get into the director's mind, your job becomes easy, and you just don't have to do another take. That's it. You are just a one-take star. You're a Okay, natural star. we have a rapid fire segment. Rapid fire for you quickly. segment. Go So for Nabila it. and I will kind of alternate between the two and Sure. as fast as Natu Natu. It has to be as fast. Sure, ma'am. So we'll start with your favorite co-star. Kiara. Next film. Pawan Kalyan. Come again? Chiranjeevi or Pawan Kalyan. No brainer, I guess. Oh goodness. No, this is a difficult one. I want to have both my eyes, so if he's left and the other one is right. Okay. Nana and Mama, both in one. Absolutely. Your all-time favorite hero. Let's not take my dad because obviously it is my dad. I think Salman Khan. Ooh, your one role you'd love to play. Oh God. Did I ever tell you something I'm not able to recollect? No. Would you like to answer for him? I would like to play anything to do with sport. It's been long due. Like something like a sport-based like film. a sports-based film. Any movie that's sports-based that's bowled you over. Now you could play a Virat Kohli biopic. Fantastic. He's an inspiring soul, and I think, yeah, given a chance, it'll be fantastic. Yeah, we both have a you look similar. Okay, so we've decided a Virat Kohli biopic. Go ahead. Good one, good one. My next one, your favorite tourist place, your favorite tourist destination. Switzerland. Can I give two? Sure. Rajasthan and Switzerland. Arre wah, Rajasthan and Lovely, Switzerland. yeah. That sounds nice. So, when not acting and not wooing young girls, what would be your, I mean, unintentionally, what would be your best way to unwind? Horse riding and binge watching movies. Lovely. Binge watching movies. Okay, go ahead. Now, you're an excellent dancer. So what's your go-to dance move? Ma'am, I heard Rajiv ji has a famous dance move. हमारा नाटू नाट को सब लोग देख लिया है. Everybody has seen it over the months. Can Sir, we have Natu we will Natu? make yours as famous as the Oscar Natu Natu. I promise. No, look. Can we have the Natu Natu, please? No, Rajdeep, you we'll have do to it two ways. We'll do Okay. this two ways. I'll teach you my dance Yeah. moves, but off stage. On stage, we'll do Natu Natu since that is the rage of the moment. Now,
once you do my dance move, this audience won't be here anymore. Let's find No, out. no, Shashank. I think we'll okay, see that. right? Can we hear for, is anybody want to see this? Yes, Rajdeep ji, come on. Teach That was him it. Natu, Natu, So I he think we teaches you start the with step. Rajdeep teaching the master. Yeah. Yes, and then I will teach him the second. The dance move, Rajdeep, we're taking your mic away Yes, thank so that you no, start no, dancing. no, no. The dance move that I do is strictly Bambaya, where you know the Okay. thing, it's all on you know. Okay, on the, sir, let's, He how's can that? be Bombay, no Basically, problem. yeah. Can we get some music, please? You can play to Natu Natu. Okay, basically, if you do your knees in this way, we used to call it in Bombay, we call it the bhajia dance because you're doing your bhajiyas this way. So basically, you're doing So this. that's what I did after every take of this song. My knees are wobbling. So let's see, let me see if let you can me do see the how bhajia you do dance. Basically, you have to keep your knees wobbling. Five, 6, 7, 8. That's it. What? Do it again. 1, 2, 3, 4. 5, 6, Six. 7, 8. Okay, we'll try. Okay. Can we have That's the music, the please? simpler version. First of all, Thank you. because he's doing it impromptu for us. Uh, the worry is that because this song has become so big, wherever you go, they're going to ask Ramcharan ji, forget about all the earlier films, bas Natu Natu karo. You know, you'll almost be like Gabbar Singh. You know, Amjad Khan was with Gabbar Singh. Everyone said, "Are oh Samba." So why not, sir? For them, for showing us so much love, I will keep doing it for them. So Natu Natu is always going to be there. Absolutely, absolutely. You don't mind that as your signature Not at tune. all. It is my tribute back to them. Can I add then one final request? Yes, ma'am. We have some suspenders for you and for For whom? Ramcharan to add to the very famous suspender dance. I'm just going to quickly get it. I know what you're doing. Wait. I think we Before have I run. seen Natu Natu. I think everybody has seen, and we've done it enough. And What is I the think suspender? just turn on All the right, YouTube. at least Rajdeep, sir, you with the suspenders. Come on. See. No, no, no. I request you not to. I request you. This is one difficult step, sir. Even मेरे को भी याद नहीं है अभी. मैं वापस have to go back to my dance rehearsals. I swear to God, it takes a lot of, and once you do it, no, you take it out of your head and say, "हाँ मेरे को घर जाना है अभी." वो suspender, you know, I saw those shots It is during the film. very difficult, sir. That one, you should see it. I feel like I'm going back to that bad school day, you know. I don't want to go. That Monday blues I'm getting seeing this. Okay, now that you know, now that you Ramcharan escaped that, Ji. would you do that hook step for us from Natu Natu? Would Which you? I just did it. No. Let's go all the way. Oh, Let's man. go all the See, way. See, I mean, if Let all of us try. anybody knows it, he'll be nice as Yeah, as, then as, we as train. my- We, I trained. we, I'm gonna we watch tried it. to practice a You- couple you of steps do? before. Yeah. I mean, Just the hook step, basic though. hook They step, know it, yeah. I'm going to watch. Come on. Go for it. Okay, we'll try. Okay, Slower than you, of course. sure, ma'am. Is this the To learn from Thank the you, sir. great. Thank you so much. Thank you for being such a sport, Ramcharan. Thank you. Thank you. Okay, just to Thank say, you, thank you. It's been wonderful to have you here. Thank you, sir. You've given us a glimpse into your world, your team,
your lovely wife. We wish you all the very best in the next few months. I'm sure that's going to be an even bigger day than that Oscar big day. So you've got plenty to look forward to. But you've done us all so proud, and truly the India moment is reflected in 2023 with what RRR has achieved. So thanks very much, Ram Charan, for doing this. Ladies and gentlemen, straight off that plane from Los Angeles, Ram Charan. Ladies and gentlemen, please raise a warm applause. Mr. Ram Charan, can I please request you to stay on stage for just about a minute while I call upon stage Mr. Rajiv Ranjan Jha, Director Projects, and Mr. S.S. Rao, Chief General Manager of Power Finance Corporation Limited, to come up on stage and present a very small token of our appreciation to the superstar. Ladies and gentlemen, a warm round of applause. Thank you, sir. With that, ladies and gentlemen, we've reached to a final session there. We're going to begin that shortly. I really hope you enjoyed Mr. Ram Charan's session, especially a big spot there, doing the Natu Natu for us, which swept the Oscars with the best song. Let me take the opportunity to thank our sponsors. The India Today Conclave in its 20th edition has been presented by RP Sanjeev Goenka Group, powered by Kirloskar, crew presented by Hefel, technology partner Hitachi, conclave partner Hindustan Power Project Group, knowledge partner Reva University, luxury mobility partner BMW India, state partner Uttarakhand, partner TOPS, celebration partner Radico Khaitan, social innovation partner NEC Corporation India, industry partner REC Limited, banking partner SBI, life insurance partner Life Insurance Corporation of India, bespoke partner Damilano. We do hope you're tweeting to tweet with the hashtag India Today Conclave. And as you all know, viewers, ladies and gentlemen, our gala session is Mr. Amit Shah, the Union Minister of Home Affairs and Cooperation. He's going to be with us shortly. All right, ladies and gentlemen, let me introduce you to our final gala session of the evening, the architect of 2024, the man with the blueprint. You don't call him Chanakya for anything, but to take it from here, I will call upon stage our session's moderator, my colleague Sudhir Chaudhary, consulting editor, India Today, to come up on stage and take it from here. Namaskar, a very good evening to all of you.
और जैसा कि आप जानते हैं, इस समय मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप सब लोग अपनी कुर्सी की पेटियां ठीक से बांध लीजिए, क्योंकि मौसम बदलने वाला है। क्योंकि इस समय हमारे साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं, इस हॉल में मौजूद हैं और आपको लगातार अपने जवाबों से वो झटके देते रहेंगे। दिस इज़ द मोस्ट अवेटेड इंटरव्यू ऑफ दिस एरा, इस साल का, और मुझे यकीन है कि ये ऐसा इंटरव्यू होगा जो कि एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा, क्योंकि आज गृह मंत्री जी अपना ब्लूप्रिंट भी आपके सामने पेश करेंगे। सर, लेकिन आप लोगों को ये जो अनुभव मिल रहा है यहाँ, जो 1 घंटे ये शानदार अनुभव मिलने वाला है, इसकी एक ही फीस है और वो है थोड़ी अच्छी तालियां। अमित जी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने समय निकाला, हम सब आपके लिए उसके लिए आभारी हैं। सेशन का जो नाम है आर्किटेक्ट ऑफ 2024, द मैन विद द ब्लूप्रिंट, तो हम उम्मीद कर रहे थे कि आप कोई ब्लूप्रिंट लेकर आएंगे। ब्लूप्रिंट तो होता ही है, मगर इंटरव्यू में कोई, मैं नहीं मानता कोई भी राजनीति में काम करने वाला व्यक्ति या नेता अपना ब्लूप्रिंट इतने सार्वजनिक रूप से सबके सामने रखेगा। आप निकलवाने का जरा प्रयास करिए। मैं कोशिश करता हूँ, आई विल ट्राई। तो जैसा कि हमने सेशन का नाम रखा था और दिस इज़ द मोमेंट ऑफ इंडिया, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि 2014 से और अब हम 2023 में आ गए, एक नई व्यवस्था आप लेकर आए। जब आप सत्ता में आए, आपकी विचारधारा अलग थी। आपका विजन ऑफ इंडिया वो बाकी लोगों से कैसे अलग है, और ये जो समय अभी आपको 9 साल का मिला है, इसमें आप कितना बदलाव ला पाए? देखिए, आप थोड़े बैकग्राउंड में जाएंगे तो मेरी पार्टी का विजन बहुत स्पष्ट है। मेरी पार्टी जब से बनी तब से, और ये 10 साल की, अगर 9 साल की आप बात कर रहे हैं, तो मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से मेरी पार्टी की विचारधारा के आधार पर और हमारे नेता मोदी जी के तय किए हुए लक्ष्यों के आधार पर चल रही है। जहाँ तक विजन का सवाल है, हम शुरू से राजनीति में मानते आए हैं कि इस देश एक अलग प्रकार का देश है। ये देश बहुत पुराना देश है, हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है, और इस देश की नीतियाँ इस देश की स्थानीय परिस्थिति के आधार पर बननी चाहिए, न कि 2-3 करोड़ की आबादी वाले देशों से एडॉप्ट की हुई नीतियाँ हो सकती हैं। और दूसरा, हम मानते हैं कि जिस प्रकार का भारत के अंदर पोटेंशियल पड़ा हुआ है, हमारे देश के भूभाग में, हमारे देश की जनता में, और विशेषकर देश के युवाओं में, हम सब ने लक्ष्य रखना चाहिए कि जब आज़ादी की शताब्दी हो, तब हर क्षेत्र के अंदर भारत दुनिया में सर्वप्रथम हो। यही नीति लेकर हम चल रहे हैं और इसी के लिए हर क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। अमित जी, आर्किटेक्ट ऑफ 2024, सबसे बड़ा सवाल आज सबके मन में जो है वो ये कि अगले साल जो चुनाव होगा लोकसभा का, अब उसमें क्या होने वाला है? अगले साल से इस देश को कौन चलाएगा? आप ही चलाते रहेंगे या कोई बदलाव आएगा? और आप भी चलाएंगे तो क्या इसी स्वरूप में या किसी और फॉर्मूले के तहत? देखिए, जहाँ तक चुनाव का सवाल है 2024 का, इतने बड़े देश में देश की जनता जब तय करती है कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, किस पार्टी की सरकार होगी, तब उसका आकलन जनता ही कर सकती है। परंतु मैं देश के हर हिस्से में जाता हूं और मैं मानता भी हूं और प्रयास भी करता हूं कि मेरा घनिष्ठ संपर्क जनता के साथ रहना चाहिए। मैं जनता की नब्ज को टटोल कर आपको एक बात
आपकी चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहता हूं कि आने वाले चुनाव में फिर से एक बार पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और मोदी जी तीसरी टर्म के लिए प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और आज़ादी के बाद का जो शुरुआती समय था, उसके बाद पहली बार एक महीने में 70 के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री 3 बार पूर्ण टर्म के लिए चुनकर आएगा और पूर्ण बहुमत के साथ चुनकर आएगा। जैसा आपने कहा, अगर जो आप कह रहे हैं सही हो जाता है तो ये प्रधानमंत्री मोदी आप सही मानकर चलिए, आगे का सवाल पूछो। 3 टर्म लगातार बैक टू बैक प्रधानमंत्री मोदी को मिलेंगे, आपको मिलेंगे। इससे पहले जब हम देश के राजनीतिक इतिहास पर नज़र डालते हैं तो नेहरू एरा और इंदिरा गांधी का एरा, इन दो को हम एक बेंचमार्किंग हमारे देश में हो गई है कि नेहरू के समय में ये होता था और इंदिरा गांधी के समय में ये होता था। क्या आपको लगता है कि मोदी एरा अब नेहरू और इंदिरा एरा से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, बेंचमार्किंग में पहले नंबर पर है, और क्या आप उनको अब हमारे देश के महानतम प्रधानमंत्री के तौर पर मानेंगे? देखिए, सभी ने अपने अपने समय में अच्छा काम करने का प्रयास किया है, अपनी अपनी समझ के हिसाब से, अपनी अपनी शक्ति के हिसाब से और अपने अपने समय के हिसाब से, क्योंकि हर समय में अलग अलग चुनौतियां होती है, हर व्यक्ति की अलग प्रकार की क्षमताएं होती है, हर व्यक्ति का अलग प्रकार का विजन होता है, मगर सब ने अच्छा प्रयास किया है, ऐसा मैं तो कम से कम मानता हूँ। जहाँ तक मोदी जी का सवाल है, मोदी जी ने भारत के लोगों के अंदर महत्वाकांक्षा को जीवित करने का काम किया है। देश के 60 करोड़ लोग जो कभी स्वप्न नहीं देख पाते थे, वो गरीब लोगों के मन में स्वप्न देखने की आशा का संचार करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और नरेंद्र मोदी जी ने हर भारतीय के मन में आज ये सपना निश्चित रूप से खड़ा किया है कि जब आज़ादी की शताब्दी मनाई जाएगी, समग्र विश्व के अंदर भारत सर्वप्रथम होगा और भारत दुनिया में हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रहा होगा। 2014 में जब आए तब बदलाव की लहर थी। 2019 में जब आए तो आपने सबका साथ सबका विकास की बात की, गवर्नेंस पर आप आए। 2024 में आपका यूएसपी क्या होगा? देखिए, यूएसपी वगैरह शब्द आप करते हैं, हमारा एक सालों पुराना एजेंडा है। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से एक ही नीति पर चलते हैं कि देश के हर भारतीय का भारत के संसाधन पर अधिकार है, और दूसरी बात हर एक के जीवन स्तर को ऊपर लाने का प्रयास कर। मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ। ये जो ऑडियंस है उसमें से काफ़ी लोगों को मालूम होगा, मगर काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको मालूम ही नहीं होगा कि इस देश में 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके घर में परिवार में एक भी बैंक अकाउंट नहीं था। उनका भारत के अर्थतंत्र के साथ कोई जुड़ाव ही नहीं था। इस देश में 10 करोड़ घर ऐसे थे जहाँ शौचालय नहीं था, टॉयलेट नहीं था। इस देश में 3 करोड़ घर ऐसे थे कि जहां बिजली ही नहीं थी। इस देश में देश के 60 करोड़ गरीबों के स्वास्थ्य की चिंता करने की किसी ने सूद नहीं ली थी। इस देश में 60 करोड़ गरीबों की भूख की किसी ने सूद नहीं ली थी। आज 9 साल के बाद पीछे मुड़कर देखते हैं, हर घर में बैंक अकाउंट है, हर घर में बिजली है, हर घर में शौचालय है, हर एक को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का बीमा मिला हुआ है, और हर गरीब को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, और हर गरीब के घर में गैस का सिलेंडर भी है। मैं नहीं मानता किसी भी 10 साल में इतना बड़ा परिवर्तन देश के अंदर आया होगा। और ये 60 करोड़ लोगों के जीवन में पहली बार अनुभव आया है कि देश की आज़ादी के बाद जो लोकतंत्र आया है वो मेरे लिए है। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और एक दृष्टि से देखें तो आज विश्व में कोई भी समस्या हो, विश्व में कोई भी समस्या आज हो, पूरे विश्व के नेता राह देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी इस समस्या के बारे में क्या बोलते हैं।
इसका बहुत बड़ा महत्व है। 2014 से 2023 तक में परिवर्तन आया है। विश्व की हर समस्या के समाधान के लिए भारत के दृष्टिकोण को, भारत के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण माना जाता है। आपको ऐसा लगता है कि ये पिछले 9 साल में, ठीक है, आपने विकास किया होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बनाया होगा, आर्थिक रूप से भी विकास किया होगा, लेकिन लोगों की जो एक सोच होती है अपने देश के प्रति, अपने एक राष्ट्र के प्रति, अपनी सरकार के प्रति, उस सोच में भी आपको कोई बदलाव दिखाई देता है? बहुत बड़ा बदलाव है भाई। भारत गौरव का अनुभव हर व्यक्ति कर रहा है। आज़ादी के 75 साल जब होने जा रहे थे, मोदी जी ने हर घर तिरंगा का कार्यक्रम दिया। तिरंगा किसी को खरीदने से मिल नहीं रहा था, और कोई घर भारत में ऐसा नहीं होगा, कोई बिल्डिंग ऐसा नहीं होगा जहां पर आपको तिरंगा नहीं दिखाई पड़ा होगा। ये बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन है। मैं आपको कोरोना की बात कर रहा हूं। जब कोरोना की शुरुआती सुगबुगाहट सुनाई दी गई, देश भर के पंडित ये कह रहे थे, और फिर दुनिया भर के पंडित ये कह रहे थे कि भारत का बहुत बुरा हाल होगा, हमारे स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर का दुनिया में नंबर देने जाए तो बहुत नीचे तक है, सब मानते थे। मगर जब कोरोना समाप्त हुआ तब पूरी दुनिया ने स्वीकार कर लिया कि कोरोना का सामना भारत ने सबसे अच्छे तरीके से किया है। न केवल हमारे वैज्ञानिकों ने इसका R&D कर हमारे वैज्ञानिकों ने इसका एंटीडोट बनाए, ये तो ठीक है, परंतु इसको 130 करोड़ लोगों तक टीकाकरण करना, ये टीकों को पहुंचाना, 17,000 फुट ऊंचाई से लेकर सागर के मध्य में बने हुए छोटे हुए गांव के और लक्षद्वीप के एक अंतिम परिवार तक, और पहुंचाना, टीका देना, और 5 ही सेकंड में इसको मोदी जी की हंसती हुई फोटो के साथ टीका की रिसीट भेज देना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं मेरा अनुभव बताता हूं। मैं अमेरिका से आए हुए एक मेरे निजी स्वजन को मिला हूं, जिनको बहुत तकलीफ थी यहाँ आने में। उस वक्त मैंने बोला क्या प्रॉब्लम हो गया भाई, इतने चिंतित क्यों हो आप लोग? तो उसने कहा हमारा वैक्सीनेशन तो हो गया है मगर सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। मैंने बोला हमारे यहाँ लगवा देते पहले आकर, तो मोबाइल पर आ जाता। आज पूरे देश में बिहार का एक व्यक्ति अगर गुजरात के अंदर श्रमिक है और किसी कारखाने के अंदर वो श्रमिक का काम कर रहा है, उसको अपने हिस्से का 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं गुजरात में चाहिए तो अपने कार्ड से ले लेता है और उसके बाकी के परिवार का बिहार में मिल जाता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। टेक्नोलॉजी का उपयोग कर जनता तक मोदी जी ने शासन की सुविधाओं को पहुंचाया है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। और एक बात आप मान कर चलिएगा, चाहे स्टार्टअप की बात कर लीजिए, चाहे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात कर लीजिए, चाहे पॉलिसी बनाने की बात कर लीजिए, हर क्षेत्र का मिला जुला आज असर ऐसा है कि इतनी दुनिया भर में स्लोडाउन की चर्चा हो रही है, भारत वो स्लोडाउन से आगे निकल चुका है कोरोना के बाद। ये मोदी जी ने बनाई हुई नीतियों का परिणाम है। आर्थिक नीतियों पर हम चर्चा करेंगे। अब आपके बारे में बात करते हैं। मोदी जी ने जब भी आपको कोई जिम्मेदारी दी, आपने बहुत अच्छे से निभाई। 2014 के चुनाव में आपने बहुत कमाल का आपका खुद का प्रदर्शन था, जिसकी वजह से आपकी पार्टी को फ़ायदा मिला। आपने यूपी में इतनी सीटें दिलवाई, फिर आप बीजेपी के अध्यक्ष बने, बीजेपी को नई ऊंचाइयों पर आप ले गए, और फिर आप होम मिनिस्टर बने इस देश के। ये 4 साल जो आपके गृह मंत्री के तौर पर रहे हैं, अगर मैं कहूं कि आप हाउ विल यू रेट योर सेल्फ एज द होम मिनिस्टर? देखिए, रेटिंग तो जनता ही करती है, और ज़्यादा से ज़्यादा साहस कर लो तो आप लोग करते हो। बाकी अधिकार तो जनता का है, चुनाव में जनता बताती रहती है। परंतु मुझे बहुत संतोष है। मैं जब देश का गृह मंत्री बना, तब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री 2014 में बने, तब से लेकर आज तक 9 साल में कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और वामपंथी उग्रवाद, ये 3 ऐसे हॉटस्पॉट थे
जो नासूर बनकर देश की आंतरिक सुरक्षा को परेशान कर रहे थे लगभग 4 दशक से, जिसका कोई समाधान नहीं दिखता था। और इन 9 साल में मोदी जी की नीतियों के कारण पीछे मुड़ कर देखते हैं तो आज कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रहा है। एक साल में 1,80,00,000 यात्री कश्मीर को विजिट किए हैं। ये आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। हर प्रकार की हिंसा के अंदर 70% कमी हुई है। आतंकवादियों की रिक्रूटमेंट जो लोकल युवाओं से करते थे वो लगभग बंद हो गई है। पथराव की घटना आज तक जैसा चैनल हमेशा जो बताता रहता था आज बता नहीं सकता है। जुलूस भी वहां निकलते नहीं है। एक प्रकार से आप ऐसा कश्मीर की जनता फील कर रही है कि कश्मीर के अंदर अब सच अर्थ में कानून और व्यवस्था की परिस्थिति अच्छी है, आंतरिक सुरक्षा की परिस्थिति अच्छी है। इसी प्रकार से वामपंथी उग्रवादी क्षेत्रों में मैं आज आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं कि इन 9 साल के प्रयासों के परिणाम स्वरूप झारखंड और बिहार पूर्णतया वामपंथी उग्रवाद से आज मुक्त हो गए। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश भी लगभग मुक्त हो गए। छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में वामपंथी उग्रवाद बचा है। मुझे भरोसा है कि इसमें भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को काफ़ी सफलता मिलेगी। वामपंथी उग्रवादी क्षेत्रों में भी लगभग 65% से ज़्यादा हर क्षेत्र में, हर प्रकार के आंकड़ों में कमी आई है। और इसी प्रकार से नॉर्थ ईस्ट के अंदर 8 राज्यों में ढेर सारे युवाओं ने सरेंडर किया है, हथियार डाले हैं, मेन स्ट्रीम में आए हैं। हमने कई सारे समझौते किए हैं। नॉर्थ ईस्ट के 2 राज्यों के बीच में सीमा के समझौते जब से राज्य बना तब से नहीं होते थे, आज हो रहे हैं। वहाँ पर डेवलपमेंट पहुँच चुका है, विकास पहुँच चुका है और बाढ़ का नियंत्रण भी हो चुका है, रोड भी बने हैं और नॉर्थ ईस्ट की सभी राजधानी को रेल और हवाई मार्ग से जोड़ने का काम भी 24 के पहले पूरा हो जाएगा। तो एक प्रकार से तीनों हॉटस्पॉट पर आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से मोदी जी के शासन के 9 साल में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। और ढेर सारी ऐसी चीजें थी, धारा 370, राम जन्मभूमि का मसला, ढेर सारी ऐसी चीज, ट्रिपल तलाक, कोई मानता ही नहीं था कि इसका कोई समाधान संभव है। निजी तौर पर आपको सबसे ज्यादा संतुष्टि इनमें से क्या करके मिली? मुझे तो हर चीज की संतुष्टि है भाई। ये तीनों क्षेत्र में जो आज एक प्रकार से नॉर्मल प्रकार से लोग जी रहे हैं, इसका मुझे कम से कम बहुत बड़ा संतोष है और देश की जनता को भी बहुत आनंद भी है और संतोष भी। देखिए, आपकी इतनी सारी उपलब्धि हैं, अब ये भी एक उपलब्धि हो गई कि अब आज तक पर भी पॉजिटिव कवरेज चलती, ये भी उपलब्धि है आपकी। भैया ये तो मैं बोल रहा हूं तो दिखाओगे ना, लाइव है, कैसे रोकोगे? आज तक का कवरेज तो तब हो जब ये तीनों इश्यू पर कोई आप एक स्टोरी 45 मिनट की कर लिए होते मेरे बोलने के पहले। चलो अब कर लेना। आपने जम्मू कश्मीर की बात की और आपने कहा कि इतने वहाँ पर पर्यटक गए। उन पर्यटकों में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी थे और हमने उनकी तस्वीरें देखी, वो बर्फ़ में खेल रहे हैं और पिकनिक मना रहे हैं। तो लेकिन उन्हें तब भी कश्मीर में कुछ अच्छा नज़र नहीं आया। वो तब भी यही कहते रहे कि कश्मीर में बहुत समस्याएं हैं। तो आपको लगता है उन्हें आपको धन्यवाद देना चाहिए था, या क्योंकि आपकी वजह से वो इतना अच्छा, दे हैड अ गुड टाइम देयर? नहीं, धन्यवाद की मेरी कोई अपेक्षा नहीं है, परंतु मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि उसी लाल चौक में मुरली मनोहर जोशी जी और मोदी जी राष्ट्रध्वज फहराने के लिए गए थे। सेना से घिर कर जाना पड़ा था और हेलीकॉप्टर से पहुंचाना पड़ा था, क्योंकि वहां संभव ही नहीं था। राहुल गांधी कोई भी सिक्योरिटी के बगैर गए। उन्होंने खुद कहा है कि देखिए मैंने लाल चौक में झंडा फहरा दिया। उनको ये मालूम नहीं है आपके समय में नहीं फहरा सकते थे, आज फहरा सकते हो, ये मोदी जी के कारण हुआ है। अमित जी, अब आज के संदर्भ में बात करते हैं। इस समय जब हम और आप बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट नहीं चल रही है, आप देश के गृह मंत्री हैं, आपकी सरकार के पास पूरी मेजॉरिटी है और 2 मुद्दे हैं। आप कहते हैं राहुल गांधी की माफ़ी होनी चाहिए
और विपक्ष कहता है कि अडानी पर जेपीसी होना चाहिए, तो पार्लियामेंट चलेगी या नहीं चलेगी? देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में पार्लियामेंट अकेला सत्ता पक्ष या अकेला विपक्ष नहीं चला सकता, दोनों के बीच में संवाद होना चाहिए। मैं इस बार जो विवाद हुआ है इसको बारीकी से देख रहा हूं, पार्लियामेंट में ही पूरा दिन देर रात तक बैठता हूं। हमारे इनिशिएटिव की बात भी उस ओर से कोई चर्चा का प्रस्ताव भी नहीं आता है। बात किसके करें? बात मीडिया में कर रहे हैं। अब स्लोगन लाए कि पार्लियामेंट में फ्रीडम ऑफ स्पीच हो। पार्लियामेंट में फ्रीडम ऑफ स्पीच है ही भाई, आपको कोई नहीं रोक सकता, मगर पार्लियामेंट में फ्री स्टाइल नहीं बोल सकते, रूल्स के हिसाब से बोलना पड़ता है, रूल्स को पढ़ना पड़ता है, रूल्स को समझना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है, बाद में रूल्स के हिसाब से पार्लियामेंट में डिबेट होती है। जैसे रोड पर बोलते हैं ऐसे पार्लियामेंट में नहीं बोल सकते। अब इतने बेसिक कंसेप्ट ही अगर क्लियर नहीं तो हम भी क्या कर सकते? पार्लियामेंट चलाने के एक नियम बने और वो हमने नहीं बनाए हैं, उनकी दादी के पिताजी के समय से चल रहे हैं। वो भी इसी रूल्स के तहत चर्चा करते थे, हम भी इसी रूल्स के तहत चर्चा करते। ना नियम समझना ना कुछ करना, और फिर कहते हैं कि बोलने नहीं देते। ऐसा नहीं होता है भाई, कभी भी कोई भी खड़ा होकर नहीं बोल सकता। इसके नियम बने हुए, इसकी एक पुस्तिका है जो सालों पुरानी है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं। मैं 2 उदाहरण आपके माध्यम से देश की जनता के सामने रखना चाहता हूं। एक, इंदिरा जी गई थी इमरजेंसी के बाद इंग्लैंड में, और उस वक्त शाह कमीशन बन चुका था। इंदिरा जी को कुछ दिन के लिए जेल में ले जाने का भी प्रयास हुआ था, और उस पर किसी पत्रकार ने इंग्लैंड में पूछ लिया कि आपका देश कैसे चल रहा है। तो उसने कहा वी हैव सम इश्यू, मगर मैं यहां नहीं बताऊंगी मेरा देश अच्छा चल रहा है। और विदेश में आकर मेरे देश के खिलाफ मैं कुछ नहीं बोलूंगी, यहां आकर मैं इंडियन हूं। एक दूसरा, अटल जी विपक्ष में थे और कश्मीर पर यूएन में चर्चा होनी थी, सरकार कांग्रेस की थी। पहली बार आज तक के इतिहास में और अंतिम बार हुआ है कि भारतीय दल का नेतृत्व किसी मंत्री ने नहीं किया था, विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, क्योंकि ये कश्मीर पर चर्चा थी। जी, ये जो भरोसा होता है, कुछ इश्यू ऐसे होते हैं जो राजनीति के ऊपर होते हैं। मैं मानता हूं सबने ये परंपराओं का पालन करना चाहिए, और हम ना उनकी पर टिप्पणी करें ना उनके उद्गारों पर टिप्पणी करें। भारत की विदेश में जाकर बुराई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, किसी और देश की संसद में जाकर बुराई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस बात पर हमारा टिप्पणी है। और मैं मानता हूं कांग्रेस ने देश को कभी ना कभी इसका जवाब देना पड़ेगा। पर आप माफी पर बिल्कुल अड़े नहीं है कि माफी मांगनी ही पड़ेगी? भाई, अड़े है नहीं अड़े है, आप स्पीकर नहीं हो। मैंने कहा कि स्पीकर के सामने बैठकर दोनों पार्टियां चर्चा करें, 2 कदम वो आगे आए, 2 कदम हम आगे आए, संसद चलने लगेगी। मगर सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और एक्शन में कुछ नहीं करना, ऐसे नहीं होता है। अभी कांग्रेस पार्टी ये भी कह रही थी कल की शेर आ गया पार्लियामेंट में, इस तरह की बातें अब हो रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने कल कहा जब वो पार्लियामेंट आए कि शेर आया, संसद में शेर आया। तो आपको ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की छवि पर भी बहुत एक काम हो रहा है? पहले उनको तपस्वी कहा गया, फिर अब जब वापस आए तो कहा गया कि अब शेर आ गया है पार्लियामेंट में, अब फिर शेर आने के बाद वो कह रहे हैं कि पूरी मोदी सरकार मुझसे डर गई है। देखिए, जनता बहुत मुहिम तरीके से सारी चीजें देखती है। ये पूरी तपस्या के बाद नॉर्थ ईस्ट में 3 चुनाव हुए, तीनों चुनाव हार गए, कहीं कुछ नहीं आया। एक भी जगह 5 का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर पाए, और तीनों उनके स्टेट थे। ये पूरी तपस्या के बाद हुआ है। अब इस सवाल के दूसरे भाग पर आते हैं, और वो भाग ये है कि लगातार गौतम अडानी के मुद्दे पर सरकार पर हमला हो रहा है और जेपीसी की मांग हो रही है।
ये कहा जा रहा है कि मोदी सरकार ने गौतम अडानी की बहुत मदद की है। उस पर अभी तक देश ने आपका पक्ष नहीं सुना है, और आज मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ये मंच है जहां आप बता सकते हैं लोगों को। नहीं, मैं बड़ी स्पष्ट, हमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है इसमें। देश की सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज का संज्ञान लिया, एक कमेटी बनाई है, 2 रिटायर्ड जजों की अध्यक्षता में कमेटी बनाई। उसके सामने सभी लोगों के पास जो तथ्य है वो रखने चाहिए, किसी को नहीं बख्शना चाहिए अगर कुछ गलत हुआ है तो, और वो न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा रखना चाहिए। उसके बाद में भी अगर लगे रिपोर्ट ठीक नहीं है तो जरूर उठाना चाहिए। ये प्रक्रिया को आप फॉलो नहीं करोगे और आपको लगता है कि ऐसे मुद्दे को उठाकर देश को गुमराह कर दोगे, ऐसे कुछ नहीं होता है। जनता भली भांति जानती है, आरोप तब चिपकते हैं कि व्यक्ति का कंडक्ट, पास्ट का जीवन उस आरोप के अनुरूप हो। इस तरह से आरोप नहीं चिपकते हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसे सुनवाई के योग्य माना, सुप्रीम कोर्ट ने अगर इसे जांच करवाने के योग्य इस मुद्दे को माना, तो आप भी फिर सरकार भी अपनी ओर से कोई जांच करवा सकती थी, सेबी को कह सकती थी। और किसी सुप्रीम कोर्ट ने भी सेबी को कहा है, सेबी ने अपने हलफनामे में कहा है, एक मिनट, सेबी ने अपने हलफनामे में कहा है कि हम जांच कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये जांच एक पैरेलल चलेगी, आप भी जांच कर एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दीजिए। सेबी को कहा ही है, और सेबी ने यह भी कहा है कि हम जांच कर रहे हैं। राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि ये मुद्दा उठाकर उन्होंने आपकी किसी दुखती रग पर हाथ रख दिया है, ऐसा कॉन्फिडेंस है उनको। देखिए, अब राहुल गांधी के बारे में मैं इतने बड़े मंच पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी करना नहीं चाहता। सबको खुशफहमी में रहने का अधिकार है और रहना चाहिए। अब अमित जी, एक और जो लगातार विपक्ष का आरोप है वो ये कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, और लगातार विपक्ष के नेताओं को इस पर निशाना बनाया जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब 2017 की मैं बात कर रहा हूं, यूपी का चुनाव था, कांग्रेस की एक बड़ी नेत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार हमने किया था तो क्यों कार्यवाही नहीं हो रही है, हम पर सवाल खड़े करे थे। अब हो रही है तो हाय तौबा कर रहे हैं। ये सारी एजेंसियां, कोई एजेंसी कोर्ट के ऊपर नहीं है जी। किसी भी नोटिस को भी आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, 1। किसी भी एफआईआर को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, 2। और किसी भी चार्जशीट को भी कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं, 3। भाई, कोर्ट में जाने की जगह यहां पर हो हल्ला कर क्या होगा? और मैं देश की जनता को पूछना चाहता हूं, किसी भी व्यक्ति ने करप्शन किया है, ऐसा अगर किसी भी जांच में एजेंसी के ध्यान में आता है तो एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? और ये सारे लोग जो हाय तौबा कर रहे हैं, इसमें 2 केस छोड़कर सारे केस रजिस्टर्ड उनके टाइम में हुए हैं, हमारे टाइम में नहीं हुए हैं। उन्होंने अपने शासन में जो 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार किया, उस वक्त सीबीआई में फिलहाल मामला टालने के लिए केस रजिस्टर कराए थे। फिर इसके अंदर धन शोधन का मामला है तो ईडी कर रही है। पहली एफआईआर उनके समय में हुई है, 2 केस छोड़कर, सारे केस में हमने नहीं किया है भैया। और कोर्ट में जाते हुए उनको कौन रोक रहा है? और बहुत, हमारी पार्टी में तो कम है, उनकी पार्टी में ढेर सारे अच्छे वकील हैं। नहीं, पर अभी उनको बेल भी अगर मिलती है तो वो इसको एक जीत की तरह प्रोजेक्ट करते हैं, और ये कहते हैं कि भाई देखिए, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे सिसोदिया हो, चाहे कविता हो, चाहे शिवसेना के जो नेता हों, सिर्फ कुछ खास लोगों को ही निशाना बनाया जा रहा है, या ममता बनर्जी की पार्टी के जो लोग हों। ठीक है, फिर वो कुछ दिन जेल में रहते हैं, फिर बेल लेके बाहर आ जाते हैं, फिर वैसे ही आपके खिलाफ एक दुष्प्रचार वो करते हैं। तो ये एक नैरेटिव वॉर भी है। देखिए, हर चीज को जनता बारीकी से देख रही है और जनता आपका अपना मैंडेट देगी। मैं मेरी पार्टी और मेरी सरकार की ओर से निश्चित रूप से कह रहा हूं, एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम कर रही है, इसमें कोई दखल किसी का नहीं है। और मेरा सभी से ये अनुरोध रहेगा कि आप न्याय के रास्ते का रुख अख्तियार करिए, यही सही रास्ता है।
एक अमित जी, एक बात होती है टाइमिंग। जब हम टाइमिंग की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग टाइमिंग, किसी भी एक्शन को टाइमिंग से जोड़ते हैं कि ये फेयर था या नहीं फेयर था। जैसे मान लीजिए BBC ने सरकार के खिलाफ कोई डॉक्यूमेंट्री दिखा दी तो कुछ हफ्तों के बाद उनके ऊपर IT की कार्रवाई हो गई। नहीं, मैं तो डॉक्यूमेंट्री के टाइमिंग पर सवाल उठाता हूँ। 2002 की घटना 2023 में चुनाव के अगले साल दिखाने का क्या मतलब है? भाई बताओ, कोई मतलब है? ये पूरी घटना 2002 की है। चुनाव है 2024 में, आप 2023 में देखा, तो आप इसके टाइमिंग की क्यों बात नहीं कर रहे हो भाई? और जहां तक ये इनकम टैक्स के टाइमिंग की बात है, मैंने भी पूछा किसी को, ये 3 साल से इनके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस हो रहा है। अब कोई अपने आप को कानून से ऊपर मानेगा तो कोई नहीं है कानून के ऊपर, सबने कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। पर आपको ऐसा लगता है कि एक नैरेटिव वॉर है और ये एक लड़ाई चल रही है जिसमें एक तरफ मान लीजिए BBC भी हो सकता है, पश्चिमी मीडिया हो सकता है, जिनको आप अर्बन नक्सल कह सकते हैं, लिबरल्स हो सकते हैं, वो आपको उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए अर्थव्यवस्था है, G20 है, उनको ना G20 अच्छा लगता है, ना आपकी GDP ग्रोथ रेट उनको अच्छी लगती है, ना विश्व में आपका जो मान सम्मान हो रहा है वो उनको अच्छा लगता है। एक नैरेटिव ये बनता है कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था डूब रही है। देखिए, मैं नहीं मानता देश में कोई भी अर्थशास्त्री ऐसा कहता होगा कि विश्व भर की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में हमारी अर्थव्यवस्था 1 मार्क भी नीचे है। कोई नहीं कहता है। अब किसी का चश्मा ही अगर पीला है तो हम कुछ नहीं कर सकते। और नैरेटिव उनके करने से सेट नहीं होता। ये तो 2002 से मोदी जी के पीछे पड़े हैं, 2000 की साल से इनका नैरेटिव चलता है। तो ना मोदी जी मुख्यमंत्री के नाते 3 बार 4 बार चुनकर आते, ना 2 बार प्रधानमंत्री के नाते चुनकर आते। नैरेटिव देश की जनता तय करती है। डेमोक्रेसी में जनता सब चीज़ों को देखती है, इवेल्युएट भी करती है और उसको जवाब भी मतदान के अंदर देती है। मैं जब आपके इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था तो मैंने AI की थोड़ी मदद ली और मैंने सोचा कि मैं AI से भी कुछ सुझाव लेता हूँ। तो मैंने उसमें एक टॉपिक भरा, इंडियाज़ मोमेंट, ये भारत का पल है, इस पर कुछ लिख कर दें। तो AI ने शुरू में तो अच्छी चीज़ें लिख के दी कि ठीक है भारत बहुत अच्छा कर रहा है, और आखिर में उसने लिखा कि भारत में बहुत डिविसिव पॉलिटिक्स हो रही है, भारत में सिविल सोसाइटी में बहुत डिवीज़न हो रहा है, भारत में ह्यूमन राइट्स का हनन हो रहा है। कहने का मेरा मतलब ये है कि पहले ये पश्चिमी मीडिया में आया, फिर इंटरनेट में आया और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एम्बेडेड हो गया है। तो ये एक अलग तरह का एक वॉर एक अलग लेवल पे चला गया है और इसके लिए आपको लगता है और अभी समय लगेगा इससे निपटने के लिए, या आपने क्या सोचा है, कैसे इससे आप? देखिए, हमने तो, हमारा रणनीति स्पष्ट है। हम सच्चे मन से देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। हम सच्चे मन से देश के गरीब के लिए काम कर रहे हैं और हम सच्चे मन से भारत को महान बनाने के लिए काम कर रहे हैं। नैरेटिव बिल्टअप करना आप लोगों का काम है और वो नैरेटिव सच्चा है या झूठा है वो तय करना जनता का काम है। दोनों लोग अपना अपना काम करते रहिए। हमें जितनी भी शक्ति ईश्वर ने दी है वो भारत को महान बनाने के लिए लगा रहे हैं। अमित जी, इंटरनल सिक्योरिटी में आप अपने सामने अब सबसे बड़ी चुनौती क्या मानते हैं? एक पाकिस्तान का फ्रंट है, एक चीन का फ्रंट है, एक 2.5 फ्रंट, हम अपने देश का भी फ्रंट की बात करते हैं, और अभी अलग अलग जो रिपोर्ट्स आती हैं। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था सिप्री की जो ये कहती है कि हमारे सारे जो पड़ोसी देश हैं सब के सब चीन से हथियार खरीद रहे हैं। पाकिस्तान 77% खरीद रहा है, बांग्लादेश 74% खरीद रहा है, श्रीलंका भी खरीद रहा है। तो हम चारों तरफ से मेड इन चाइना हथियारों से घिरे हुए हैं। और ऐसे में क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपकी है, आप इन बातों को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? देखिए, मैं बहुत स्पष्टता से आपको बताना चाहता हूं कि आज भारत आज़ादी के बाद इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के मामले में आज़ादी के बाद अगर सबसे ज़्यादा सुरक्षित है तो वो आज है, क्योंकि हमारी नीतियाँ स्पष्ट है। दुनिया में कोई भी
भारत की सीमा और सेना इसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकता है। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के पहले हमारी कोई रक्षा नीति ही नहीं थी। रक्षा नीति विदेश नीति का एक छोटा सा चैप्टर बनकर रह गई थी। आज हमारी दोनों पॉलिसी स्पष्ट है। हम पूरी दुनिया से दोस्ती चाहते हैं, किसी से झगड़ा नहीं चाहते हैं, परंतु हमारी सीमाओं के अंदर किसी का दखल सहन नहीं करेंगे। पहले आए दिन पाकिस्तान से घुसपैठ होती थी, अनेक सारी घटनाएं होती थी। एक बार सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करने के बाद किसी की हिम्मत नहीं है कि भारत की सीमाओं के अंदर किसी भी प्रकार की छेड़खानी कर सके। और ये दो घटनाओं के बाद पूरी दुनिया में संदेश गया है कि अमेरिका और इजराइल के बाद एक तीसरा देश भारत ऐसा है जिसके साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। G20 अब हमारे देश में होने जा रहा है और हम सुपर पावर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जो सुपर पावर बने जितनी भी देश, सुपर पावर शब्द ठीक नहीं है, ना हम एक कंसेप्ट में विचार करते हैं। हम हमारे देश को आगे ले जाना चाहते हैं और हम मानते हैं कि समाज जीवन के हर क्षेत्र में भारत विश्व में सबसे आगे हो। भारत कभी भी सुपर पावर बनने की ना सोच सकता है, ना सोचना चाहिए। ना ये हमारे देश का कल्चर है, ना हमारे देश का लक्ष्य हो सकता है। लेकिन दोस्ती के आधार पर भी, मैत्री के आधार पर भी आप मजबूत हो सकते हैं, ये आपका कॉन्सेप्ट है। जी जरूर। G20 से हमारे देश के लोगों को कितना फायदा होगा, ये हमारे देश के लोग पूछते रहते हैं बार बार। देखिए, हमारे देश में ढेर सारा परिवर्तन हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। सुविधाओं को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। स्टार्टअप, आज दुनिया अचंभित होकर भारत के स्टार्टअप को देख रही है। R&D में हमारे यहाँ आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। हर क्षेत्र की पॉलिसियाँ हमने नई बनाई, चाहे अंतरिक्ष हो, चाहे ड्रोन हो, चाहे खदानों का कॉमर्शियल उपयोग हो, हर क्षेत्र की PLI के कारण बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है। और हम सब लोग मान रहे हैं कि हम दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। ये सब लोग मान रहे हैं। G20 एक ऐसा मौका है कि भारत में जो परिवर्तन हुआ है ये पूरी दुनिया देखे। और पहली G20 की मीटिंग बहुत बड़े समय के बाद शायद कभी नहीं हुई ऐसी है, जिसमें G20 की सीरीज ऑफ मीटिंग 59 शहरों में हो रही, 59 सिटीज में हो रही। एक भी राज्य, एक भी संघ शासित प्रदेश ऐसा नहीं है जहां G20 की कोई ना कोई मीटिंग नहीं होगी। तो दुनिया से 1 लाख से ज्यादा लोग जो आएंगे वो हर राज्य में जाएंगे। हमारी संस्कृति की जो विविधता है, हमारी खान पान की विविधता है, हमारी जो अतिथि देवो भव का कंसेप्ट है, हमारा वसुधैव कुटुंबकम का कंसेप्ट है, इसको ये फील कर कर जाएंगे। और भारत की संस्कृति, नए भारत की कल्पना और भारत के अचीवमेंट, तीनों को लेकर वो जाएंगे। मैं मानता हूँ हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है और मोदी जी ने इसको बहुत अच्छे तरीके से प्लान कर कर भारत का दुनिया को परिचय कराने का एक प्लेटफॉर्म बनाया है। और जो लोग यहाँ आएंगे और यहाँ से जाएंगे, वो सारे लोग भारत की सुगंध लेकर जाएंगे। मैं वापस 2024 पर आता हूँ। आप 2024 के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए अपना सबसे प्रमुख प्रतिद्वंदी किसको मानते हैं? आप कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, अब कांग्रेस से मुक्त आप कर पाए भारत को या नहीं कर पाए, या फिर क्षेत्रीय दलों को आप अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानते हैं? देखिए, अभी तो जो चित्र देख रहा है, हर राज्य में हमारी स्पर्धा किसी न किसी अलग अलग दल से होगी, ऐसी स्थिति दिखाई पड़ती है। मगर स्पर्धा तो है ही, लोकतंत्र में सभी लोग चुनाव लड़ते हैं, अपनी अपनी बात को, अपने अपने विचारों को अपने अपने बैकग्राउंड के साथ रखते हैं और जनता फैसला करती है। पर बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखें तो आप कांग्रेस से जब लड़ते हैं तो आसानी से जीतते हैं, लेकिन जब क्षेत्रीय दल से आप लड़ते हैं तब थोड़ी परेशानी होती है। ऐसा नहीं है, यूपी में हम 4 चुनाव सपा बसपा से लड़कर जीते। ये उत्तर आरजेडी को कई बार हमने बिहार में हराया है, कई बार हराया है।
नॉर्थ ईस्ट में हम क्षेत्रीय दलों से ही लड़कर जीते हैं। अभी हम रामचरण के साथ बैठे हुए थे, आपने भी देखा, और जब ये ऑस्कर अवार्ड मिले भारत को, तो इसमें भी नॉर्थ साउथ डिवाइड करने की कोशिश हुई। बहुत सारे लोगों ने कहा, खड़गे जी ने भी पार्लियामेंट में कहा कि ये साउथ इंडिया ने जो है ये 2 ऑस्कर अवार्ड भारत को दिलवाए हैं। तो ये एक लगातार एक कोशिश है नॉर्थ और साउथ डिवाइड की। आपको लगता है? भारत को ऑस्कर जो भी दिलाता है इसका गौरव होना चाहिए। जो भी दिलाए, कोई भी भारतीय दिलाए, इसका हमें गौरव होना चाहिए और हमें गौरव है। परंतु ये नॉर्थ साउथ का जो डिवाइड देख रहे हैं ना, वो डिवाइड नॉर्थ साउथ का नहीं है। मैं भी फिल्में बड़े शौक से देखता हूँ। कुछ फिल्में भी अभी साउथ की बहुत चल गई। मैंने भी इसको ध्यान से एनालिसिस किया है। जिन फिल्मों में भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति और भारतीयता थी, वो फिल्मों को ज्यादा स्वीकृति मिली है। भारत बदल रहा है सुधीर जी। बिल्कुल। और अगर आप ये RRR की भी बात करें तो यहाँ पर भी, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि बॉलीवुड, जब फिल्मों की बात हो ही रही है, दक्षिण भारत की फिल्में हमारी परंपरा संस्कृति को आगे बढ़ा रही हैं? देखते हैं हम। कोई भी बढ़ा सकता है भाई, इसको आप दक्षिण उत्तर न करिए। जो बढ़ाता है उसको जनता पसंद करती है। लेकिन बॉलीवुड इसमें आपको लगता है थोड़ा पीछे है? ना जी, मैं ऐसी कोई टिप्पणी करने यहाँ नहीं आया हूँ। मैं इतना कहना आया हूँ कि जनता का टेस्ट बदल रहा है और टेस्ट को सफलता के लिए सबने मैच करना चाहिए। आप फिल्में देखते हैं? और हाउ ऑफन यू वॉच फिल्म्स? नहीं, मैं बड़े इंटरेस्ट के साथ फिल्में देखता हूँ। इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा कि आपकी जो छवि है वो बहुत ही सख्त प्रशासक की छवि है कि कैसा लचर प्रशासक होना चाहिए। क्या बात कर रहे हो भाई? नहीं, मतलब आपकी जो पर्सनैलिटी है वो ऐसी है कि भाई बहुत गुस्से वाले होंगे और हर समय क्रोध में रहते होंगे, बुरा मान जाते होंगे, और एक सॉफ्ट साइड ऑफ योर पर्सनैलिटी वो बहुत लोगों के सामने अभी तक नहीं आया है। नहीं, ऐसा नहीं है। काफी लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा कर आप सॉफ्ट पर्सनालिटी का इस प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास मत करिए। मैं जैसा हूं, जनता मुझे अच्छे से जानती है। मेरे सार्वजनिक जीवन में विधायक और सांसद के नाते 30 साल पूरा होना आ गया, तो ये बहुत लंबा समय है। बार बार जनता मुझे अपना प्रतिनिधि बनाती है, तो जानती ही होगी। आप अमित जी खुद एक नॉन पॉलिटिकल परिवार से आते हैं। आपको पॉलिटिक्स का शौक था, आप पॉलिटिक्स में कैसे आए? देखिए, ये सवाल आप इसलिए पूछ रहे हो कि आप पॉलिटिक्स को सत्ता के साथ जोड़कर दिख रहे हो। मेरे जैसे भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं के लिए देश का वातावरण ऐसा है कि मेरी बात काफी लोग साहजिकता से नहीं लेंगे, सरलता से नहीं लेंगे। इसको बोलने की खातिर बोला गया वाक्य भी मानेंगे, मगर मैं दृढ़ता से बोलना चाहता हूं, मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में है जो भारत के लिए पॉलिटिक्स में है, और मैं भी उसमें से एक कार्यकर्ता हूं। मोदी जी के लिए जो लगातार बातें होती हैं, इस बार बात कही जा रही है कि कब्र खुद देंगे, पहले मौत का सौदागर, चौकीदार चोर है, वगैरह वगैरह, ये सब होता है। इस बार फिर से चुनाव से पहले इस तरह की बातें हो रही हैं। आपको ऐसा लगता है कि जब खड़गे साहब कहते हैं कि ये 10 सिर वाला रावण है, और फिर वही आपको पार्लियामेंट में भी मिलते हैं और फिर आपके साथ बैठ के, प्रधानमंत्री के साथ बैठ के बाजरे की खिचड़ी भी खाते हैं, तो जब इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं तो क्या ये पर्सनल रिलेशनशिप को भी खराब करता है, या कभी आप इस बारे में बुरा नहीं मानते? नहीं भाई, सब अपने अपने विचारों के अनुसार बोलते हैं, मगर परंतु जो इस प्रकार के उद्गार करते हैं, मैं इसका एक अलग एनालिसिस किया है। सोनिया गांधी जी से लेकर एक कब्र खुदने वाला या मोदी तुम मर जाओ वाला जो नारे लगाए हैं आप पार्टी के लोगों ने, इस सारे नारों के बाद मोदी जी ज्यादा मजबूत होकर बाहर आए, क्योंकि किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। लोकतंत्र में जनता ही सबसे महत्वपूर्ण, जनता का ही अभिप्राय होता है। हाउ इज योर इक्वेशन विद गांधी फैमिली? जब आप कभी पार्लियामेंट में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं या किसी सार्वजनिक मंच पर कभी मिलते हैं, तो आपका रिलेशनशिप कैसा है?
भाई मेरा रिलेशनशिप कैसा होगा, जैसा सामने वाले का मेरे साथ होगा ऐसा मेरा उनके साथ होगा। तो उल्टा कर देते हो, उनका कैसा है? देखिए, मेरा कोई ऐसा व्यक्तिगत संबंध किसी गांधी परिवार के सदस्य से नहीं है। राजनीति में जो औपचारिक संबंध होते हैं वो है, वो एक और पार्टी के नेता है, मैं मेरी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, तो दोनों अपनी अपनी पार्टी का काम करते हैं। अमित जी, पिछली बार 303 सीटें मिली थी, इस बार आपका आकलन अपना क्या है? और अगर 303 भी आपको लेनी भी हैं तो इस बार आपको शायद साउथ दक्षिण भारत से और ज़्यादा सीटें लेनी पड़ेंगी। आपने कुछ, आप आर्किटेक्ट हैं, ब्लूप्रिंट आपने बनाया होगा, कुछ शेयर कर सकते हैं? मैं इतना कह सकता हूं, एरिया आप छोड़ दीजिए हम लोगों पर, परंतु इतना निश्चित कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए दोनों की सीटों में बढ़ोतरी होगी, कमी कहीं पर भी नहीं। तो आप कह रहे हैं कि 303 से भी ऊपर जाएंगे? जी। कश्मीर में इस साल आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले आप कश्मीर में चुनाव करा सकते हैं, जम्मू कश्मीर में? सुधीर जी, साच अर्थ में चुनाव कराने का काम चुनाव आयोग का है, तो आपने गलत जगह पे सवाल पूछ लिया है। नहीं, पर आपका अपना भी तो एक आंकलन होगा कि क्या चुनाव आयोग जब भी कहेगा, जब भी उनकी तैयारी पूरी होगी, वो चुनाव हो जाएगा। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आपके हाथ में है, इसलिए मैंने आपसे पूछा। देखिए, चुनाव आयोग जब उनकी तैयारी पूरी होगी तब गृह मंत्रालय से रिपोर्ट मांगेगा, हम तुरंत ही रिपोर्ट भेज देंगे। और ये रिपोर्ट जनरेट नहीं हो सकती है क्योंकि अब सारे पुलिस स्टेशन ऑनलाइन है, सारे आंकड़े ऑनलाइन है, एनसीआरबी में हर पल के हिसाब से सारी एफआईआर दर्ज हो जाती, मतलब काउंट हो जाती है, तो आंकड़े तो कोई जनरेट कर नहीं सकता। जब भी वो रिपोर्ट मांगेंगे हम रिपोर्ट दे देंगे। हमारा समय अब समाप्त हो रहा है, तो लास्ट में एक दो सवाल आपसे और करता हूं। कैबिनेट रीशफल की बड़ी चर्चा हो रही थी अभी हाल ही में कि आप चुनाव से पहले एक बार कुछ फेरबदल करेंगे। कहाँ चल रही है रीसफलिंग? मोदी जी ने करना है, आप लोग क्यों चर्चा कर रहे हो? जब भी वो करना चाहेंगे हो जाएगा। संविधान ने मोदी जी को जिम्मेदारी दी है कैबिनेट रीसफलिंग की, तो सबने एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लेना चाहिए। नहीं, हम लोगों को बहुत टेंशन हो रही है इस बात की। अमित जी, मैंने एक चीज़ और भी नोट की अभी आपके साथ बैठ के कि आपने कम से कम 20 किलो वजन ज़रूर लूज़ किया होगा, एंड यू आर लुकिंग वेरी फिट टुडे, और टच वुड, ये अच्छी बात है। तो कोई किसी खास तरह का फिटनेस रिजीम आपने अभी फॉलो किया है? भाई, ऐसा है कि मैंने जो फॉलो किया है दूसरे को बीमार कर देगा। सबने अपने अपने डॉक्टर को पूछकर डॉक्टर की सलाह से करना चाहिए, मगर सबने फिट होना चाहिए। बट आपने क्या किया, कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? नहीं, मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ, खाने पीने पर भी कंट्रोल किया है, योगा करता हूँ, आसन भी करता हूँ। अगर मैं आपके अपने परिवार की बात करूं तो जब हम जैसे भारतीय संस्कृति की बात कर रहे थे, आपकी जो पोती है, आप देखिए आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाता है जब आप उनकी बात करते हैं। तो आपने उनको वैदिक स्टडीज़ भी आप पढ़ा रहे हैं, संस्कृत में भी आप पढ़ा रहे हैं, और भारतीय संस्कृति की पूरी जानकारी भी आप उस बच्चे को दे रहे हैं। जी, वो पढ़ रही है। इसके पीछे क्या सोच है आपकी, और आप चाहते हैं कि क्या आपका जो एजुकेशन सिस्टम है? सबने पढ़ना चाहिए, सबने जानना चाहिए। हर क्षेत्र में पढ़ाई से तो फायदा ही होता है। मैं मानता हूँ कि हमारे पुराने ग्रंथों में बहुत जीवन के बहुत सारे रहस्य भी छिपे हैं और देश की जानकारी भी छिपी है। देश के कल्चर को समझने लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। तो बच्ची पढ़ रही है, अच्छे से पढ़ रही है। आपके समय में ये 8-9 साल में जुडिशियल ओवररीच के भी कई मामले सामने आए हैं। जैसे मान लीजिए अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अब इसमें चीफ जस्टिस भी उस पैनल में रहेंगे। आप इस तरह की चीज़ों का स्वागत करते हैं? देखिए, मैं मानता हूं कि संविधान ने सबकी मर्यादाएं करी है। मेरी भी मर्यादा है, मैं अदालत पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, परंतु सब ने अपने अपने दायरे में रहकर करना चाहिए। ये कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसमें अदालत के किसी फैसले पर मैं टिप्पणी कर दूं। परंतु मैं इतना सुनिश्चित मानता हूं कि संविधान ने जो 3 व्यवस्थाएं करी है, तीनों व्यवस्था ने एक दूसरे पर भरोसा रखना चाहिए। जी, पर ऐसा हो रहा है क्या? क्योंकि हम लॉ मिनिस्टर के भी बयान देखते हैं, हम कई बार ये चीज़ देखते हैं कि जहां ओवरलैपिंग हो रही है, वो कंसर्न मंत्रालय के मंत्री है, वो बोल सकते हैं।
मैं टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा अदालत पर। जी, पर क्या आप इसको चैलेंज करना चाहेंगे? क्या आप देखिए, आप सफल नहीं होंगे सुधीर जी। मैं इस पर टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा। तो अमित जी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमारा टाइम अप हो गया है और ब्लूप्रिंट आपने ऐसा कोई ख़ास आज बताया नहीं, पर इंतज़ार रहेगा कि आप देश के सामने ब्लूप्रिंट कभी प्रस्तुत करेंगे। और इतना ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे सवाल ऐसे थे जो लोग जानना चाहते थे, मैंने कोशिश की कि मैं आपसे पूछूं और आपका पक्ष जो है उन महत्वपूर्ण सवालों पर जो पहले नहीं आया था वो आपका आ सके। एंड आई होप यू एंजॉयड दिस इंटरव्यू। जी धन्यवाद। Thank you, Minister. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Home Minister, Mr. Amit Shah. Thank you, sir. Appreciate it. Thank you. With that, ladies and gentlemen, we announce dinner. Dinner takes place at Raja Bagh, right outside on the lawns.